Now, mechanism of vision will include how do we see? How do we see rather than I'll say how an image is formed on the retina. Okay? For that, the first step would be bachalo, that the light from an object, like if you are looking at me, the light from an object will fall on your cornea. The first place the light falls, which is significant for us to understand, is your cornea. As the light will fall on the cornea will cause the diffraction of light. You understand a diffraction, Mucho? Or I'll say that it will cause bending of light, right? And the light will fall on the lens. Now the lens will change it. I'm sorry. Now the lens will further bend the light, and this light will fall where, Vachilo? On the retina. Huh? Now within milliseconds, we even don't understand what is happening. Your autonomous nervous system will send a signal to the ciliary body. Ciliary body will undergo changes, contractions. The ciliary muscles है ना उसके, तो सस्पेंसरी लिगामेंट में टेंशन में भी चेंज आएगा और लेंस का जो शेप है वो बदल जाएगा, मतलब उसका फोकल लेंथ में चेंज आएगा, है ना. आप जब लेंसेस पढ़ते हो फिजिक्स में तो एक लेंस का फोकल लेंथ होता है, नहीं पढ़ा तो रे ऑप्टिक्स में पढ़ोगे आप उसको, ठीक है. तो लेंस के फोकल लेंथ में चेंज आने की वजह से वो जो इमेज है वो भी कहाँ गिरेगा, फोविया सेंट्रालिस ऑफ द येलो स्पॉट. Got my point? And this is called as accommodation. So the second step that will occur will be called as what? Accommodation. The first step is light falls on the cornea. Cornea causes the bending of light. Light falls on the retina. Whatever. Cornea, lens bending on the retina. Immediately, what will your brain do, bachalo? It will send signals to your ciliary muscles which are connected to the suspensory ligament. The shape of the lens will change depending upon whether I am looking at the first bench or the last bench. Change in the shape of the lens will change the focal length of the lens. Ultimately, image will fall on the fovea centralis of the yellow spot, and this is called as the accommodation. Now the image has been accommodated on the retina. So I explained it to you. हाँ, ये सिंपल में कैसा होता है, आपको सिर्फ क्या ध्यान में रखना है, कॉर्निया ने बेंड किया, लेंस ने बेंड किया, इमेज किस पे गिरा, रेटिना पे. ब्रेन ने उस इमेज को शार्प कर दिया और किसके ऊपर भेज दिया, फोविया सेंट्रालिस, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अकोमोडेशन. फिर वो अकोमोडेशन को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने अलग अलग वर्ड बताया कि कैसे पूरा होता है. हाँ, ठीक है, ये दोनों स्टेप समझ में आया बच्चों, किसी को दिक्कत है यहाँ पे? नहीं. थर्ड स्टेप वुड बी, because of the light, structural changes will occur in the opsin and retinal, especially the retinal. Which changes will occur, bachalo? Structural changes will occur in the retinal. कैसा changes होगा बच्चों? Structural changes occur in the retinal. So if this is opsin and this here is
retinol. Retinol is the aldehyde of vitamin A. Okay, in chemistry, I don't know whether you studied this or not, that the molecules have cis forms and trans forms. Right, yeah, na? The molecules have what? Cis forms and trans forms. Can anybody tell me in simple words, like I don't know what is cis forms and trans forms. एक लेमैन की भाषा में बताओ मुझे, देखो ये सर अनुष्का या opposite sides. So there is cis conformation and trans conformation. यही वर्ड यूज करते हैं ना तुम लोग केमिस्ट्री में. तो समझो ये रेटिनॉल का एक फॉर्म है सिस और ट्रांस में से. समझा मेरा बात? बिकॉज ऑफ द लाइट, the retinol undergoes changes and it changes from one form to another form, cis to the trans form. Okay, so who has caused the change? The light. As a result of which the retinol will get dissociated from opsin. Did you understand my point? Retinol got dissociated from opsin. Why did retinol get dissociated from opsin? Because it changed its form from one form to another. तो उसके अंदर क्या आ गया? स्ट्रक्चरल चेंजेस आ गए, जिसके वजह से वो फिट नहीं हो पाया. वो क्या हो गया? वहां से डिसोसिएट हो गया. कौन किससे डिसोसिएट होगा? रेटिनॉल डिसोसिएट हो गया. किससे? ऑप्शन से. तो अगर मैं ये मान के चलूं कि ये मेरा मार्कर जो मेरे हाथ में है वो रोडोप्सिन है, ये कौन है? ऑप्सिन है. ब्लैक वाला पार्ट कौन है? रेटिनॉल है. लाइट की गिरने की वजह से रेटिनॉल के अंदर चेंज आ गया और वो उससे क्या हो गया? बच्चे लोग डिसोसिएट. आया समझ में आप सबको? यस और नो? सो बिकॉज ऑफ these structural changes we'll get some biochemical changes. Okay, which is the cell I have drawn over there in front of you, Chalo? Have I drawn a rod cell or a cone cell? Rod cell. और वो रॉड सेल के पीछे देखो क्या बनाया मैंने. क्या बनाया बच्चों? रोडोप्सिन. हाँ, लाइट की वजह से उसके अंदर कौन से चेंजेस आ गए बच्चों लोग? स्ट्रक्चरल चेंजेस. ओके, एंड दैट कॉजेस the generation of potential difference in the photoreceptor cell. Okay, just to remind you, in the first lecture itself I told you there is polarization, depolarization and repolarization. So can I say depolarization is a potential difference that occurs because initially it was in which state? Polarized state. So here there is a generation of potential difference which actually is called as hyperpolarization. क्या कहते हैं इसको? Hyperpolarization. It is not mentioned in the text. Okay. So because of light, retinol will dissociate it from opsin, and that will cause what? Potential difference in what? Photoreceptor cells. And what is this potential difference called, bachalo? It is called as hyperpolarization. As a result of which there will be action potential, that is,
polarization of which neurons? Bipolar neurons. And this depolarization will be given to which cells, which look? Ganglion cells will get the action potential. And then the action potential will be carried by the optic nerve to your cerebrum, the visual cortex of your brain. You remember cerebrum was divided into frontal lobe, parietal lobe, occipital lobe and the temporal lobe. And in the occipital lobe, we had made an area that was called as the vision area. बराबर है? Now what will go to the vision area? Action potential. Just like तुम चॉकलेट खाते हो, तो मैंने बोला है वो चॉकलेट का शुगर तुम्हारे ब्रेन तक पहुंचता नहीं है. मैंने तुमको चिमटी लिया, वो चिमटी ब्रेन तक पहुंचता नहीं है. ब्रेन तक क्या पहुंचता है? एक्शन पोटेंशियल. फिर ब्रेन अपनी पुरानी मेमोरी के हिसाब से और पुराने एक्सपीरियंस के हिसाब से उस एक्शन पोटेंशियल को इंटरप्रीट करता है. व्हाट माय पॉइंट? सो इज माय image like this going to your brain, or an action potential is going to the brain? Now action potential is interpreting it as Bubinsa, because right from childhood you have seen this action potential as a human being. You got my point? And in your 11th standard you came to know that this human being who looks like this with this type of action potential is Bubinsa. Got my point? So for initial first 3 months of your life, when you're just born, you don't respond to the objects and everything. Gradually you come to understand about the colors. That is why you get attracted towards red ball, green, bright colors. Your eyeballs start moving. उसके पहले नहीं वो होते बच्चों. मतलब these are some of the milestones we come to know that the baby's brain and eyesight is developing. Okay, when it is born, if you keep a red ball in front of it and move like this, it will not show any change. Gradually after a few months, if you move it, it will show a change like this. तो eyeballs उसको फॉलो होगा. मम्मी डैडी अगर रूम में आ गए तो उसके eyeballs उनको फॉलो करना स्टार्ट हो गए. फिर धीरे धीरे ब्रेन रिकॉग्निशन स्टार्ट कर देता है कि ये मम्मा है, ये डैडी है, ये मम्मा है, ये डैडी है. ऐसा धीरे 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 ब्रेन क्या करना पड़ता है? इंटरप्रीट करना स्टार्ट कर देता है. आया समझ में? व्हाट माय पॉइंट? कि ये जो मेरी आवाज आपकी तरफ जा रही है, या तो मराठी है, इंग्लिश है, या तो हिंदी है. बराबर है? ये तीनों लैंग्वेज बचपन से ही इसका एक्शन पोटेंशियल तुम्हारे ब्रेन में जा रहा है और आपकी वर्निकेज एरिया को अभी इसको इंटरप्रेट करने आता है. यही अगर मैं कन्नड़ या तमिल कुछ बोलना चालू कर दूं तो तुम्हारे ब्रेन में आवाज तो जाएगी, डिपोलराइजेशन तो जाएगा, लेकिन क्या वो उसको इंटरप्रेट कर पाएगा? वो डिपोलराइजेशन को नहीं कर पाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड. यस और नो? सो जैसे ये डिपोलराइजेशन आपके विजुअल कॉर्टेक्स तक जाता है, आपका विजुअल कॉर्टेक्स ओवर इयर्स हैज लर्नड टू इंटरप्रेट इट एज अ पर्टिकुलर इमेज. व्हाट माय पॉइंट? आया ना? क्या सुना कि नहीं सुना कुछ तुम लोग? सिद्धार्थ क्यों इतनी नींद आ रही है तेरे को? हाँ, जा कॉफी पी के जा. क्लियर एवरीबॉडी? यस और नो? नाउ after some milliseconds, once again retinal will change into its original form and it will get associated with what? Opsin. So it gets dissociated and associated. And once it again is associated, it is ready to carry another depolarization. So in the last step, there will be association of retinal with opsin again. क्या लिखा मैंने? There is association of retinal with opsin again. Any problem in your life बच्चों? Did you understand what I'm trying to tell you? आया ना? मतलब जैसी लाइट आती है, ऑप्सिन और रेटिनल एक दूसरे से क्या होते हैं? डिसोसिएट होते हैं.
बराबर है। जिसकी वजह से क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल ब्रेन में जाते हैं, ब्रेन उस इमेज को क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, मिली सेकंड के बाद फिर से क्या हो गया, फिर से दूसरा, ऐसा चलते रहता है, चलते रहता है, बार बार आपका ऑप्शन और रेटिनॉल क्या होते रहते हैं, डिसोसिएट फिर एसोसिएट, डिसोसिएट एसोसिएट। इससे क्या समझ में आता है कि एक इमेज आपके रेटिना के ऊपर थोड़े टाइम तक रह जाता है जब तक ऑप्सिन और रेटिनॉल एक दूसरे से डिसोसिएटेड है। इसका मतलब यह हुआ कि तब तक वो इमेज आपके रेटिना के ऊपर है, आपका रेटिना भी दूसरा इमेज कैरी नहीं कर रहा। और इस कंसेप्ट को ह्यूमन आई में कहते हैं द कंसेप्ट ऑफ आफ्टर इमेज। कंसेप्ट ऑफ व्हाट, आफ्टर इमेज। आई गिव यू कपल ऑफ एक्झाम्पल्स, तुम्हाला 2-3 एक्झाम्पल तुम्हाला समजून जाईल मी काय सांगतो। मध्ये ना मला एक व्हॉट्सॲप फॉरवर्ड आलेला, ओके, ज्याच्यामध्ये एक व्हिडिओ होता आणि असं होतं की ह्या व्हिडिओला क्लोजली बघा आणि त्या व्हिडिओमध्ये असं चक्री घुमत होती अशी गोल 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 आणि ते सांगितलं की 1 मिनिट त्याला बघत राहा. सो आय वॉज वॉचिंग इट व्हेरी क्लोजली अँड देन सांगितलं हाताच्या मागे बघा अँड इमिजिएटली व्हेन आय सॉ इट स्टार्टेड मूविंग. हू स्टार्टेड मूविंग? माय हँड. असं असं गोल 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 गोल. हॅज एनीबडी एल्स ऑल्सो एक्सपिरियन्स दिस? Did you get this image? What my point? So when my daughters saw it, they got amazed. How this happened? Okay, but I already knew it. Okay, this is the concept of what we call after image. Okay, when I was looking at it so closely, what happened? मेरे रेटिना के ऊपर इसका क्या था? इमेज बैठ चुका था. तो जब मैंने उसको यहाँ पे देखा तो इमेज अभी भी रेटिना पे था, इसका भी तक समझ में मेरा बात, तो मुझे उसको भूल. The concept of motion pictures is also based upon this idea. हे आपण जे मूवीज वगैरे बघतो ना, दे आर बेसिकली स्टिल इमेजेस. जो अपन देखते हैं ना कि हीरो ऐसा भाग रहा है किसी के पीछे, वो एक्चुअली है क्या कि एक ही सेकेंड में आपके रेटिना के ऊपर 20 to 25 फ्रेम्स डाल देते हो. पहले फ्रेम में हीरो ऐसा है, दूसरे फ्रेम का फोटो में ऐसा है, तीसरे फ्रेम के फोटो में ऐसा है, चौथे फ्रेम के फोटो में ऐसा है. तो अगर एक ही सेकेंड में सारे फ्रेम्स आ जाएंगे तो हर एक फ्रेम की तो आफ्टर इमेज बनेगी कि नहीं? तो आपके रेटिना में वो टूट के बनेगा कि कंटिन्यूस इमेज बनेगी? तो आपको ऐसा लगेगा कि हीरो क्या हो रहा है, भाग रहा है. आई होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट. व्हाट माय पॉइंट? इसलिए देखो बचपन में ना एक वो बुक आती थी अपनी, उसको क्या बोलते हैं, फ्लिप बुक. सो इफ यू मूव थ्रू द फ्लिप बुक यू कुड फाइंड दैट द हॉर्स इज रनिंग. So why did you find the horse running? Was the horse actually running? No. But why was it running, bachlo? After image. आलं की लक्षात? नाही ना? Understood everybody? Good boy. Okay. Human beings have a, तो एक्स्ट्रा बता रहा हूं, okay? एक मिनट. बायनॉक्युलर स्टीरियोस्कोपिक विजन. कसं विजन आहे? किती डोळे आहेत तुमच्याकडे? मग ब्रेन कडे आता मुबीन्सरचे किती इमेजेस जात आहेत? 1 की 2? 2 बच्चे. ठीक है, 2 डोळे आहेत की नाही तुम्हाला? डू हॅव 2 आईज? येस. सो हाऊ मेनी इमेजेस ऑफ मुबीन्सर आर गोइंग इन युअर ब्रेन? 2 images. But do you see 2 mubinsar or only 1 mubinsar? Because both the image superimpose on one another. And your brain will understand the depth, the 3D image of me. I hope you got my point. So with both the eyes, you can focus on one object. Like for example, with one eye, I see right side of the glass. With one eye, I see left side of the glass. No, with both the eyes, I see the same glass. What my point? Some animals like horse, he can see here also, he can see there also. That is why how the horse is supposed to walk like this. They put that. I don't know. What is the English word for that? I don't know. Flap maybe. I hope you understood. इससे फायदा क्या होता है कि जब हम दोनों आंखों से एक ही इमेज पे फोकस करते हैं
ह्यूमन बीइंग्स को डेप्थ परसेप्शन मिलता है, डेप्थ परसेप्शन कि कितनी खोल आहे. You got my point? If you keep one eye closed and you try to get down the stairs, there's a 90% chance you'll fall somewhere. Because of the problem in what? Depth perception. But with two eyes open, you know how much depth is there. I hope you got my point. Like right now, there's Nandini in front of me. I know exactly if I want to slap Nandini, how much should be the depth of the stroke. बराबर है ना? If one eye, I may miss the depth or something. I hope you got it. So this was about the mechanism of vision of human eye. Okay. What is the first step? Light will come. It will fall on the cornea, will cause its bending. Then the light will fall on the lens, will cause its further, and the image will fall on the. So which are the two main places to cause the bending of light? But which is more important? मतलब ज्यादा बेंडिंग कौन करता है? कॉर्निया. नेक्स्ट स्टेप में तुरंत क्या होता है बच्चों? अकोमोडेशन. अकोमोडेशन में क्या होता है? लेंस अपना फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है और इमेज को गिराता है. किसके ऊपर गिराता है बच्चों लोग? रेटिना के येलो स्पॉट के फोविया सेंट्रैलिस के ऊपर. सिर्फ ऐसा नहीं बोलेगा रेटिना के येलो स्पॉट के फोविया सेंट्रैलिस के ऊपर. जैसे ऐसा होता है, देयर इज अ डिसोसिएशन ऑफ. सबसे पहले देयर इज अ स्ट्रक्चरल चेंज इन रेटिना from one form to another form, immediately followed by dissociation of retinal from optic, followed by generation of potential differences in the photoreceptor cells, depolarization of bipolar neuron, depolarization of the ganglion cells, depolarization of the optic nerve, and the optic nerve carries the depolarization to your brain, and brain, based upon your previous memories and experiences, will understand the image. I hope you understood. In your first year medicine, you learn much more greater than this. Okay, this is called the bleaching cycle, and there are many more steps. So I've given you a short thing about the bleaching cycle. I hope you understood. Any questions बच्चों लोग? कोई सवाल है आपकी लाइफ में? नहीं तो कॉपी करेंगे फटाफट. चलो, we can draw and write later on. See now here. So in short, tell me what is the function of the human ear? The human ear helps you to and balance both. तो कान जो है आपको सुनने में और बॉडी को बैलेंस रखने में दोनों में हेल्प करता है. That is why the human ear is called as a stato-acoustic organ. Remember this word. Stato का माना होता है बैलेंस करने वाला. किंगडम एनिमेलिया मैंने ये वर्ड यूज किया था, स्टैटोसिस. acoustic मतलब hearing. So the human ear is a dash organ. It's a stato-acoustic organ. How is the ear? It's a stato-acoustic organ. What does stato mean, bachelor? Balancing. And acoustic means hearing. Okay. Now it's quite a complex structure, bachelor. It is not only this what you see. Okay. This is only a small part of the ear, which is called as the pinna. Then it goes in, जो अपन कॉटन बर्ड वगैरह डालते हैं, ये ऐसा. ये रेड वाला पार्ट दिखा? ये सबसे बाहर वाला पार्ट है. That is called as the external ear. है समझ में? Then it is followed by another division inside, which is called as the middle ear. And then the actual hearing organs are still deeper, last bench. But ध्यान दो ना बेटा, एक तो 2 GB का हार्ड डिस्क है. ओके. जो ब्लैक वाला पार्ट है वो क्या है?
मिडिल ईयर। हाँ ध्यान दो, लिखो मत, एक तो कितना मालूम है अपना, कितना स्पेस कम रन रन होते रहता है, बार बार रीसेट मारते रहते हैं। ध्यान दो ना, फिर ना बाद में लिखेंगे। हाँ, ये ब्लैक वाला कौन है? मिडिल। अभी समझेगा तो फर्स्ट ईयर मेडिसिन में वो बोलेगा कुछ तो बेस रहेगा, वरना इसी आटा पटा सन्नाटा देख के बैठो। और जो अंदर वाला पार्ट है, जो एक्चुअली दोनों काम कर सकता है, एक पार्ट है हियरिंग के लिए, दूसरा पार्ट है बैलेंसिंग के लिए। जैसे 3 डिविजन है ईयर के, एक्सटर्नल, मिडल, इंटरनल। एक्सटर्नल, मिडल, इंटरनल। और जो सुनने के लिए पार्ट है वो इंटरनल का पार्ट है। जो बैलेंसिंग के लिए पार्ट है वो भी किसका पार्ट है? इंटरनल। और वो इंटरनल इतने इजीली बाहर से नहीं दिखेगा आपको, इसलिए मैंने सिर्फ ये डायग्राम जो बनाया ना वो इंटरनल ईयर का बनाया, अलग अलग साथ। तो ये जो आपको दिख रहा है ना पूरा, वो सिर्फ कौन है? इंटरनल ईयर। सो हियर आई एम नॉट एबल टू सी एवरीथिंग वेरी क्लियरली, so I took it out and I have drawn only the diagram of which ear, which is internal ear. Okay, so first thing first, did you understand the meaning of the word statoacoustic, everybody? Stato means balancing, acoustic means hearing. So I'll call it as a statoacoustic organ, and I'll divide the ear into how many convenient parts? 3. What are 3 parts? The external ear, then kids which ear? The middle ear, and finally which ear? Internal ear. So the ear got divided into 3 divisions: external, middle, and internal. Let's talk about the external first. The external ear consists of this cartilaginous part, which is called as the pinna, right? And then the pinna opens into a canal. The pinna opens into a canal. Okay, your cotton bud, which you put into the canal, you're not supposed to put into the canal, but that is the canal. Okay, which is called external, बाहर की तरफ, auditory, सुनने के लिए, meatus, a canal. Okay, this external auditory meatus is lined by hair cells to trap the dust particles. The skin will show the presence of which cells, which are hair cells, and in between the hair cells there are specialized glands which secrete ear wax. Okay, ये स्किन के अंदर स्पेशल ग्लैंड्स होते हैं, जिसके अपने ये सेबेशियस ग्लैंड्स बोलते हैं हम लोग, वैसे ये स्किन में भी से ग्लैंड्स है जिनको हम बोलते हैं सेरियुमिनस ग्लैंड्स, और वो जो ईयर वैक्स है उसको हम लोग बोलते हैं सेरियुमिन। ओके, और ईयर वैक्स का फंक्शन क्या है कि ये फंगस और बैक्टीरिया को मार सकता है। सो इट इज अ प्रोटेक्टिव थिंग दैट योर ईयर विल सीक्रेट। आया समझ में? सो व्हाट डज द पिना ओपन इनटू गाइस? द पिना ओपन्स इनटू एन external auditory meatus, and this external auditory meatus is lined by hair cells and ear wax producing glands. इतना याद रखना है। उसका नाम क्या बोला मैंने? सेरियुमिनस ग्लैंड एक्स्ट्रा है ये, या उस ईयर वैक्स का दूसरा नाम क्या है? सेरियुमिन। ठीक है, देन इट एंड्स ऑन द ईयर ड्रम। व्हेन यू से दैट समथिंग इज अ ड्रम बच्चे लोग, okay, when it can vibrate bachcho log, that is what is drums. So when the sound waves will hit the eardrum, what will the eardrum do? It will begin to vibrate, and structurally the eardrum is made up of a connective tissue, and its outer layer is the skin and the inner layer is the mucus. eardrum में बीच में क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, बाहर की तरफ क्या है? स्किन है, और अंदर की तरफ क्या है? म्यूकस है। तो जब भी आवाज आएगी वो अंदर ईयर ड्रम क्या होगा? वो चलो वाइब्रेट होगा। अप टू द ईयर ड्रम इट इज कॉल्ड एज द एक्सटर्नल ईयर. आफ्टर द ईयर ड्रम इट इज कॉल्ड एज द मिडल ईयर. डिड माय क्लास फॉलो? तो एक्सटर्नल ईयर कहां पे एंड होता है? ईयर ड्रम पे. तो एक्सटर्नल ईयर में कौन से पार्ट्स है बच्चों लोग, जरा बताएंगे मुझे. पहला कौन है बच्चों? पिन्ना.
पीने के बाद क्या बोला मैंने, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस, शॉर्ट फॉर्म लिखा चलेगा ना, EAM, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस। फिर क्या बोला मैंने, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस किससे लाइंड है बच्चों, हेयर से। दूसरा, इट इज लाइंड बाय ग्लैंड्स which are secreting a protective substance which is called as the earwax. अलग लक्षात सर्वांना. Then it ends on a part which is called as the tympanum, or it is called as the eardrum. And this eardrum is made up of, what is it made up of, bacha? It is made up of connective tissue. It is made up of skin, which is outer, and it is made up of mucus, which is inner. NCRT text, exactly. So you have to remember this. That the tympanum or the eardrum is made up of middle में connective tissue, बाहर की तरफ स्किन, अंदर की तरफ म्यूकस. देखो मैं सीक्वेंस बार बार वही रिपीट कर, थर्ड टाइम हम सेइंग दिस. कनेक्टिव टिश्यू बाहर की तरफ क्या है, उसके स्किन है, और अंदर की तरफ क्या है बच्चों लोग, म्यूकस है. तीनों को मिलके हम लोग बोलते हैं टिम्पैनम और द ईयर. और ये एक ऐसा प्लेस है जहां पे आपका एक्सटर्नल ईयर खत्म हो गया. अब कौन सा ईयर स्टार्ट होगा बच्चों, मिडल ईयर. अब देखिए प्लीज, यहाँ पे ये जो एरो है यहाँ पे, ये मिडल ईयर का कैविटी है, दिख रहा है ये कैविटी बच्चों लोग. दिस कैविटी इज कॉल्ड टिम्पैनिक कैविटी. क्या कहेंगे इसको, टिम्पैनिक कैविटी. ऐकलं सर्वांनी काय म्हणू याला, टिम्पैनिक कैविटी. टिम्पैनिक कैविटी. And this tympanic cavity, through a tube called as the eustachian tube, is connected to your nasopharynx. Is connected to your nasopharynx. Alright, Lakshat? So, if I quickly want to draw, I'll go like this. I'm not trying to make a, okay, maybe this is a rough diagram. This is your what बच्चों, nose. ये आपका क्रेनियम है. ये कौन है, नोज है ना. ये नोज जिसमें ओपन होता है इसको क्या बोलते हैं बच्चों, नेसोफैरिंक्स. बोलते हैं ना हम लोग नेसोफैरिंक्स, बरोबर की नहीं. तो एनपी लिखो यहाँ पे, एनपी. एनपी इज व्हाट, नेसोफैरिंक्स. बरोबर की नाही बच्चों. आणि इकडे बघा, ही आपली टंग झाली की नाही, इकडे टी लिहू, इकडे टंग. आणि हु इज दिस, आपलं कान. And the कान is connected to your nasopharynx through a tube. What is this tube called? Eustachian tube. म्हणून आपण एक्सपिरियन्स केला की if I put any ear drops, immediately I feel a taste on my tongue, backside of my tongue. If you put something here, you can feel the taste down. Because ear, nose and throat, ENT, it's connected. Okay? The job of this eustachian tube is to maintain the air pressure in this tympanic cavity. Job of the which tube bachalo? Eustachian tube is to maintain the air pressure in the tympanic cavity. And you can experience it bachalo. If you go on flights, जब plane से जाते हो ना, as you go up, you feel there's a popping of feeling in your ear. Have you been scuba diving? Scuba diving? Okay. So when you go deep scuba diving, you can feel that popping of feeling. Okay. If you want that feeling, you can breathe in deep. Not now, just see what I'm doing. Okay, you can breathe in deep. Hold the breath with your mouth and your nose like this. And then hold the nose and blow in the nose. Blowing the nose, you'll feel the ear going into the, you feel the air going into your ears, ऐसा, and it will give you ऐसा कि कान ऐसा बंद हो गया आपका. आया बात समझ में? तो ये हवा ऊपर कैसे चढ़ा, पर through the eustachian tube. I hope you got my point. So what is the job of the eustachian tube? It helps to equalize the air pressure in the dash cavity. Tympanic cavity. ठीक है? Any problem in your life, बच्चों लोग?
So look at the tympanic cavity. So the tympanic cavity via the dash is connected to the dash nasopharynx. And the tympanic cavity is made up of three ear ossicles. Three ear, and I've told you many times, three ear ossicles. Skeleton में भी इनके नाम किए थे हम लोगों ने. क्या नाम है इनके? Malleus. Malleus is shaped like a. Incus is shaped like an anvil. विसर्ग anvil. Remember anvil? वो ब्लैकस्मिथ वाला एनविल, टॉम एंड जेरी का एग्जांपल दिया था. फिर जहाँ पे शू पॉलिश करते स्टेशन के ऊपर रहता ना, बॉम्बे में कभी देखा होगा ना शू पॉलिश वाला, वो जहाँ पे अपना पैर रखते हो वो वाला, वो सब शेप क्या एनविल शेप है. एंड स्टिरअप, स्टेप्स इज शेप लाइक अ स्टिरअप. याद है अपन जब घोड़े पे बैठते हैं तो पैर जिसके ऊपर रख के फिर घोड़े पे चढ़ते हैं ना अपने साथ, कि नहीं? तो वो जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टिरअप, स्टिरअप शेप. So there are three bones: malleus, incus, and stapes. And which is the smallest bone in the body? Stapes. Smallest muscle is stapedius, which is connected to the stapes. So the first feature is that the middle ear shows the presence of what, Bachalo? A cavity. What is the cavity called? The cavity is called as the tympanic cavity. And the tympanic cavity is connected to the middle ear via the eustachian tube. Followed by what, Bachalo? I told you about the three ear ossicles. Who are the three ear ossicles, kids? The malleus, incus, and stapes. Note one thing, okay? That your malleus is connected to the tympanum. See the diagram over there. The malleus is connected to the tympanum, and the incus is connected on one side with the malleus, on the other side it is connected with the stapes by two different joints. One of them is ball socket, the other is a hinge joint. Okay? So on one side it is connected with the malleus, on the other side it is connected with the stapes, and the stapes is connected to your inner ear. The stapes is connected to your inner ear. So kids, I'll just make it in red now. Do you see this part that I've made in red now? Yes or no? This all is part of which ear? Inner ear. So which ear ossicle is connected to the internal ear? Stapes. But now पूरा inner ear ना bony है, बाहर की तरफ पूरी हड्डियां हैं उसको. You got my point? So there are membranes which connect the middle ear to the internal ear. Try to understand this, bachcho. Okay. If I want to communicate outside this classroom, what do you expect me to communicate from this right side or from the left side? अगर मेरे को बाहर किसी को कुछ मैसेज भेजना है तो मैं ये राइट साइड से कम्युनिकेट करूँ कि लेफ्ट साइड से? क्यों रे लेफ्ट साइड से? क्योंकि यहाँ पे क्या दिख रहा है तुम लोग को? ये क्या है? विंडोज है ना. सो थ्रू दिस विंडो आई कैन कम्युनिकेट विद द स्ट्रक्चर आउटसाइड. ये तो पूरा कॉन्क्रीट है, इसे क्या बात करेगा मैं? बराबर है. तो ये जो मिडल ईयर है वो कम्युनिकेट करता है. किसके साथ कम्युनिकेट करता है? इनर ईयर के साथ. सारा बहुत नींद आ रही है आपको? हाँ, कोई टिकटॉक चलाऊं? किसके साथ? इनर ईयर के साथ. क्या करता है? कम्युनिकेट करता है. और वो कम्युनिकेशन के यहाँ पे कितने विंडोज है? दो. वन इज कॉल्ड एज द ओवल विंडो, अनदर इज कॉल्ड एज द राउंड विंडो. एंड द स्टेप्स is connected at which window, bachalo? Oval window. And beneath that window there is a small window which is called as the round window. So how many windows are there? Two. Are they part of the middle ear or the internal ear? Morons, middle ear, na? They are a part of the middle ear which help the middle ear to communicate with the inner ear. So what are the two windows? Oval window and the round window. They are part of which ear? Which help the middle ear to communicate with the. So malleus is connected to the eardrum. Incus is connected to both the malleus and the stapes.
and the stapes is connected to the incus, and the other part is connected with the oval window, and below the oval window there is another window. What is the window called? Round window. So you have how many windows? Two windows, oval window and the oval window is called fenestra ovalis, and the round window is called fenestra rotunda. Fenestra ovalis and the fenestra rotunda. आया समझ में? ऐसे दो खिड़कियां हैं. हमारे दिमाग का खिड़की खुल रहा है. Yes or no? तो ये मिडिल ईयर तक सबको समझ में आया? एक्टिंग कर रहे हो वहां का बस. कितना पार्ट है ईयर का बताइए मुझे फटाफट फटाफट. नाम बोलो उसका बच्चों क्या है? बराबर है. एक्सटर्नल ईयर किस पे एंड होता है? टिम्पैनम. टिम्पैनम इज मेड अप ऑफ डैश डैश एंड द डैश and inner mucus. The middle ear has a cavity called the tympanic cavity is connected to the dash naso via the station. Okay, the three ear ossicles are malleus, incus and stapes. Malleus is connected to the tympanic membrane and the stapes is connected to your internal ear at the oval window, and below the oval window there is a small window which is called as the round window. ठीक? हाँ, समझ में आया यहाँ तक? क्या पढ़ रहे हो तुम लोग? एनाटॉमी कि कान कैसा है, बढ़िया सा कान है. Now I'm talking about which ear? Internal ear. Don't get tired so easily. So the internal ear has got two parts. One part is for hearing and the other part is for balancing. So the internal ear has how many parts, Bachalo? Two parts. What are the two parts? There is a hearing organ and a which organ? Balancing organ. What are the two organs, Bacho? A hearing organ and a balancing organ. Okay. The hearing organ is called cochlea. What is the hearing organ called, Bachalo? Cochlea. Learn the name. What is the hearing organ called? Cochlea. So do you see that, Bachalo? Do you see the highly coiled part? What have I labeled it as? Cochlea. Okay? Now rest of the thing. Okay? Baki jo bach gaya. It is called vestibular apparatus. क्या कहते हो बच्चे लोग इसको? Vestibular APT. What is APT बच्चे लोग? Apparatus. तर किती भाग झाले? दोन. हिअरिंग साठी कॉक्लिया आणि बॅलन्सिंग साठी कोण आहे? वेस्टिब्युलर apparatus. आलं की लक्षात? हां. Now that vestibular apparatus kids consist of, see this part, 1, 2, 3. These are called the three semicircular canals. क्या कहते हैं इसको? Three what बच्चों? 3 semicircular canals, and they are for your dynamic balance. Later on I'll teach you what is dynamic balance. Okay, so who is responsible for maintaining the body balance? The vestibular apparatus. Which part of vestibular apparatus helps you to maintain your dynamic balance? The three semicircular canals. Other than that, each ear has got one saccule, one utricule. One saccule, one utricule. So you got दोनों मिलके सैक्यूलस एंड यूट्रिकुलस. बराबर है कि नहीं? और ये दोनों सैक्यूल एंड यूट्रिक्यूल टुगेदर इज कॉल्ड एज ओटोलिथ
organ. क्या कहते हैं उसको? So what is the second part of the vestibular apparatus? Otolith organ, which is responsible for your static balance. कौन सा balance बच्चों? So who is responsible for static balance? Otolith organ is responsible for the static balance. And the otolith organ consists of two parts. That is the saccule and what bachlo? The utricule. These are all new names, so you need to learn them with me right now. So internal ear has got two parts. The hearing organ is called as the cochlea. The balancing organ is called as the vestibular apparatus. The vestibular apparatus has got two parts. 1, 2, 3 semicircular canals is one part. The other part is called as the otolith organ. क्या कहते हैं इसको? Otolith organ. And this otolith organ is further made up of two parts: the saccule and the utricule. Saccule and the utricule. So saccule and utricule together is called otolith organ. Along with the three semicircular canals, it is called as the apparatus. ठीक? Have you comfortably understood up to here? Yes or no? Can you write a classification of internal ear on your own? Learn it for 2 minutes and can you write it on your own with a pencil at the back of your page? Please try. पहले learn कर लो उसको. The internal ear called? What is the hearing part of the internal ear called? Cochlea. Okay. And the balancing part is called? Vestibular apparatus. Okay. See how the NCERT introduces the internal ear. It says that the internal ear is a fluid-filled labyrinth. It's a new word for you. The internal ear is a fluid-filled labyrinth. Okay? Pronounce the word. वरना बाद में मैं पूछता हूँ तुम कुछ भी बोलते रहते. बोले labyrinth. Labyrinth. What is it? Labyrinth. So the internal ear is a fluid-filled labyrinth. आप लोगों में से कोई इंग्लिश स्कूल गया बच्चों लोग? तो किसी को मालूम है लैबिरिंथ का मीनिंग? कासिफ और जेल. I think so Siddharth has got the exact meaning. He said भूल भुलैया. हाँ सिद्धांत है ना? हाँ सिद्धांत ही बोला मैं. तो क्या एग्जैक्टली बोला उसने. क्या है उसको बोलते हैं हिंदी में? क्या बोलते हैं उसको? भूल भुलैया. एंड इंग्लिश में उसको बोलते हैं मेज. MAZE. और बायोलॉजिकल वर्ड उन्होंने क्या यूज किया वहां पे? लैब. तो उसका लिटरल जो मीनिंग है, एक्चुअल जो ट्रांसलेशन है लैबिरिंथ का क्या बनता है? ये इंटरनल ईयर एक पानी से भरी हुई क्या है? भूल भुलैया है. एक ऐसे ही बोलने वाला बात हो गया. ठीक है. वो कितनी भूल भुलैया देखते हैं अभी अपन उसको. एंड देन इट सेज दैट द हाईली कॉइल्ड पार्ट ऑफ द भूल भुलैया is called cochlea. The highly coiled part of the bhul bhulaiya is called cochlea. So what does the NCERT say? The internal ear is a fluid-filled labyrinth, and it says that the highly coiled part of the labyrinth is called as the cochlea. I hope you got my point. So this whole thing is a bhul bhulaiya, and this bhul bhulaiya is fluid filled. Now imagine a jalebi. How is a jalebi? Highly coiled, and inside is fluid filled, and that is called as the cochlea. Understood? Ayana? So it's a fluid filled labyrinth,
and the highly coiled part of the labyrinth is called as the cochlea. Did my class follow this point? Yes or no, everyone? Okay. Now, let us talk about the coiled part in more detail. So let us observe it further. So these are some of the coils that we want to observe. Okay? So this highly coiled part. How many tubes do you see now, right now? It's one or two tubes, Vacho? Two tubes. The outer one I have shown in which color? Black color. Huh? And observe. And the inner one is shown in which color? Red. Okay? So we say that the cochlea consists of an outer bony labyrinth and inner membranous labyrinth. So एक बोन हड्डी हॉलो हड्डी इमेजिन करो जिसके अंदर फ्लूइड है, फिर एक ट्यूब उसके अंदर इमेजिन करो, उसके अंदर भी एक अलग क्या है, फ्लूइड है. तो कितनी ट्यूब्स हो गई? दो, बाहर की बोनी और अंदर से मेम्ब्रेनस, और फिर मैंने उसको क्या किया सर? कॉइल कर दिया. So how many labyrinths are there, guys? How many labyrinths are there? Two. The outer one, which color I am showing the outer one in? Black. That will be called as which labyrinth? It will be called as the bony labyrinth. Correct? And the inner red one, do you see the inner red one? And that labyrinth will be called as the inner, it is called the inner membranous labyrinth. So your cochlea consists of two labyrinths, outer bony labyrinth, inner membranous labyrinth. And the outer bony labyrinth is filled with a liquid which is called perilymph. And the inner membranous labyrinth is filled with a liquid which is called as the endolymph. Okay, so the cochlea consists of two parts. What are the two parts? Outer bony labyrinth. The cochlea consists of two parts. Outer bony labyrinth filled with perilymph, inner membranous labyrinth filled with endolymph. Did you understand this point, everybody? So what is the black part, Bachalo? Bony labyrinth. What's the red part? Membranous labyrinth. What is the red one filled with? And what's the black one filled with? Perilymph. Okay. Now, if I cut a small part, now I'm making a diagram just to make you understand. It doesn't look like this, but just to make you understand. कि बाहर का जो ब्लैक ट्यूब था, हम लोगों ने क्या नाम दिया था उसका? बोनी लाइब्रेंथ. अब वो कॉइल्ड था, तुमको समझाने के लिए मैंने उसको कैसा कर दिया? स्ट्रेट कर दिया. और सिमिलरली अंदर एक और मैंने ट्यूब बनाया. कौन से कलर में बच्चों लोग? रेड. ये कौन सा वाला लैबिरिंथ है? मेम्ब्रेनस. अब आई कैन सी दैट वो बीच में मेम्ब्रेन वाली ट्यूब आने की वजह से टोटल मुझे 3 कैविटीज दिखाई दी. वो बोनी दो पार्ट में स्प्लिट हो गया, ऊपर वाला और नीचे वाला, और बीच में कौन सा पार्ट आ गया? मेम्ब्रेनस. आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट बच्चों लोग. यस और नो? चलो उसको जरा सामने से देखते हैं. ये कौन सा पार्ट है बच्चों? बोनी लैबिरिंथ. और ये कौन सा वाला पार्ट है? मेम्ब्रेनस. तो कितनी कैविटीज आ गई अभी? 3. ये किसको बिलोंग करता है? तो इसमें कौन सा लिक्विड होगा? ये किसको बिलोंग करता है? तो इसमें कौन सा लिक्विड होगा? ये किसको बिलोंग करता है? तो इसमें कौन सा लिक्विड होगा? अलग लक्षात. So inside the cochlea,
I will see the presence of how many cavities, kids? 3 cavities. Do you see the top one? सबसे ऊपर वाला? It's called scala vestibule. क्या बोलते उसको? So scala vestibule belongs to bony labyrinth or the membranous labyrinth? So BL लिखा मैंने, bony labyrinth, which will be filled with PL. What is the PL? The middle one will be called the scala media. What is the scala media filled with? Endolymph. And it will belong to which labyrinth बच्चे लोग? Membranous labyrinth. सबसे नीचे वाला कौन है guys? It is bony labyrinth, correct. It's called scala tympani. क्या कहते हैं इसको? It is filled with what बच्चों? Perilymph. Because it belongs to which labyrinth? Bony labyrinth. Structure समझ में आया? So make it a point to learn these 3 names first. That the cochlea, when you cut it in a transverse section, shows the presence of 3 cavities: scala vestibule, scala media, scala tympani. I want everyone to pronounce it. Scala vestibule, scala media, scala tympani. One more time. Scala vestibule, scala media, scala tympani. Scala vestibule is filled with. Scala media is filled with. Scala tympani is filled with. So they belong to dash, dash and dash labyrinth. Bony labyrinth. Okay. What is this? Internal part of the cochlea. Divided into how many parts? 3 parts. Shall I continue, everyone? Now, look at this red membrane over here. This one I'm talking about. Can I say it separates the scala vestibule from the scala media? Kids, give me yes or no. Yes. It is separating the scala vestibule from the scala media. Which membrane? नीचे वाला red line या ऊपर वाला red line? ऊपर वाला red line. It is named after a scientist, Reznor. So this membrane is called as Reznor's membrane. So what does the Reznor's membrane separate? It separates the scala vestibule from the scala media. And look at this membrane over here, guys. It is separating the dash from the dash. Media from the scala. And this membrane is called Basilar's membrane. क्या बोलते उसको? Basilar's membrane. So Basilar's membrane separates the tympani. तो 4 नए नाम आगे, 5 है 1 2 3 4 5. हाँ, याद कर लीजिए प्लीज उसके सारे नाम. ओके. Yes, Priyanka. What are the 3 parts of the cochlea cavities? Filled with perilymph, endolymph, belonging to the bony, then membranous bony. And what is the membrane separating the vestibule from the media? Reznor's. Media from the tympani? Basilar. लर्न करो, नया नाम है ना, थोड़ा लर्न कर दो. पाठ करें. Yes, Omkar. What's the Reznor's membrane? And Basilar क्या है? टिम्पैनी से सेपरेट. कितनी टोटल कैविटीज है? 3. कौन सी? टिम्पैनी.
बैठ जाओ बराबर, ठीक है। नाउ बचा लो, I want you to look on the basilar membrane. Which look, where are you looking at, bachalo? Basilar membrane. On the basilar membrane, there are hair cells called outer and inner hair cells. What is there on the basilar membrane, bachalo? The hair cells. Okay? Where are they located on? The basilar membrane. And above the hair cell, there is one more membrane. Above the hair cell, there is one more membrane. An elastic membrane, which is called as the tectorial membrane. ए भाई चुप करो उसको. What is the membrane called? Tectorial membrane. So I want you to focus on three parts: the basilar membrane, the hair cells, and the tectorial membrane. How many parts? Three. Basilar membrane, उसके ऊपर कौन से cells है? Hair cells. Hair cells के ऊपर कौन सी membrane है? Tectorial membrane. These parts are called the organ of Corti. What do you call it? Organ of Corti. It's an organ for hearing called organ of Corti. So what is included in the organ of Corti, bachalo? Basilar membrane, hair cells, and the tectorial membrane. All three together is called. Hello, sir. So on the basilar membrane, what do you have? Hair cells. Above the hair cells, what do you have? And all three together is called as the organ of Corti. Huh? See it. So this will be the basilar membrane. These are the which cells, which look? Hair cells, inner and outer hair cells. And above that there is a membrane which is called as the tectorial membrane. Once again, focus on the hair cells. Focus on the hair cells. Are you focusing on the hair cells? Do you see they have got some projections on basal side or the apical side? These are called stereocilia. 11th में बताया था मैंने. On the apical end of the. ए भाई कौन है ये? हाँ, समझ में आया मेरा बात? क्या बोला मैंने? हेयर सेल्स की कहाँ देखो चलो? अपाइकल एंड पे. एंड व्हाट डू यू सी ऑन द अपाइकल एंड? स्टीरियोसीलिया. एंड नाउ लुक एट द बेसल एंड बच्चे. बेसल एंड मतलब ब्लैक की तरफ देख रहे हो, रेड की तरफ. फ्रॉम हियर अराइज fibers called which fibers बच्चों? Afferent fibers, मतलब sensory fibers, and they will go to your where बच्चे लोग? Brain. You got the arrangement everyone? क्या क्या बोला मैंने? बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर कौन से सेल्स है? हेयर सेल्स है. हेयर सेल्स के अपाइकल एंड पे क्या है? स्टीरियोसीलिया. नीचे क्या है? एफरेंट फाइबर्स. और सबसे ऊपर क्या है? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन. हाँ, अभी तो थोड़ा थोड़ा ही बता रहा हूं, ठीक है? पहले याद करो उसको एवरीबॉडी. Maybe all these names are not even 10% of what you want to study in first year. but ये बेसिक एनाटॉमी तो मालूम होना चाहिए. ये नहीं मालूम तो फिर देख के बैठेगा इधर उधर कॉलेज में. समझा कि नहीं दित्या? क्या फिर से आउटर लैबिरिंथ is which labyrinth? Bony labyrinth. Which labyrinth बच्चों? Bony labyrinth. है ना? And who is this बच्चों?
And who is this? Aditya, who is this? Loudly, loudly. And who is this? So who are these three cavities? The scala, vestibule, scala, media, scala, tympani. This is the Rezners membrane, basilar membrane. जाग तो गए कम से कम. अब दुबे जी, हेयर सेल्स कौन से मेम्ब्रेन पे होंगे? बेसिलर. कितने टाइप के हेयर सेल्स मैंने बोला? इनर एंड आउटर हेयर सेल्स. देखा कौन से हेयर सेल्स का बच्चा ये? इनर एंड आउटर हेयर सेल्स. उसके ऊपर क्या बताया मैंने प्रोजेक्शंस का नाम? सीलिया. And do you see this membrane here? And what should I call this membrane? Very good. The membrane is called as the pectoral membrane. सारू छे बदला नहीं समझे क्यों? Now where should I draw the afferent fibers? ऊपर ना? नीचे यहाँ पे. Correct or not? So these are the which fibers, kids? These are the afferent fibers. And this region is the organ of Cortile. BM, hair cells, pectoral. These afferent fibers, they unite to form cochlear division of the auditory nerve. वो है, उसको क्या बोलते हैं? कौन सा डिवीजन बोलते हैं? कॉक्लियर डिवीजन. क्या लक्ष्य है? इतना अच्छे से सुन रहे हैं ना, इसलिए बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा वरना नहीं बताता था. ये कौन सा है? कौन सा डिवीजन है? कॉक्लियर डिवीजन. तिकट अजून एक डिवीजन है, and that division will be called as the vestibular division. So both of them will come together and there will be a new nerve. What is this nerve called, bachelo? It will be called as the auditory nerve. So can I say auditory nerve का दूसरा नाम will be vestibulocochlear? Give me yes or no. Yes. Auditory nerve का दूसरा नाम will be vestibulocochlear. Why is it called vestibulocochlear? Because it has got how many divisions? 2 divisions. A vestibular division and a cochlear division. The vestibular division comes from the balancing part. The cochlear division comes from the hearing part. Together it will be called as the vestibulocochlear. तो अगर आपका पेशेंट में कॉक्लियर डिवीजन में प्रॉब्लम है तो उसको नॉर्मली क्या होना चाहिए? सुनने में प्रॉब्लम होना चाहिए. और अगर वेस्टिबुलर डिवीजन में प्रॉब्लम है तो नॉर्मली किस में प्रॉब्लम होना चाहिए? चलो उसके बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी में. आया बात समझ में? और दोनों मिलके क्या बनाएंगे? ऑडिटरी नर्व, जिसको बोलेंगे वेस्टिबुलोकोक्लियर. कुछ भी नहीं है, कुछ क्या है? समझ में आया सबको यहाँ तक? तो ये मैंने आपको वेस्टिबुलर एपरेटस का स्ट्रक्चर बताया कि नहीं? क्या कर रहे हैं? वेस्टिबुलर एपरेटस क्या बोला? हाँ, क्या सिखाया मैडम? शर्वरी के बाजू वाली. हाँ, क्या सिखाया अभी ये पूरा? बस बस. I don't want to kill my confidence of you being great students and me being a great teacher. Okay, इब्राहिम में जी है वही अच्छा है. Who will answer? At least give me your confidence. Who? Where are the bright boys? Where is Daksh? I can't see Daksh. I don't want to ask him. Sit down. Not Daksh. I will ask myself. So what is the hearing organ called? Loudly. Cochlea. What is the hearing organ called?
cochlea. And how does the cochlea appear? It's a highly coiled what? Labyrinth. Yes. मोमेंटम बन उसका. हाँ? 2 मिनट की हंसी में ना वो भूल जाएगा तो लफड़ा है. समझो. What is a labyrinth? What's a labyrinth? बच्चों भूल भुलैया. Now, the cochlea is made up of how many labyrinths? One or two? What are they called? Filled with. Don't try to look at the board. Try to actively recall. Okay. In a transverse section, it shows 3 cavities. Try to actively recall the name of the 3 cavities. मत ध्यान दो टिम्पैनी वो अपना हंसे कहाँ अपना दिमागी करना याद. Scala media is filled with scala tympani, scala vestibule. Scala vestibule is separated from scala media by dash membrane. Media from the tympani by dash membrane. On the basilar membrane are dash cells. The apical end shows the presence of. Above that there is an elastic membrane called. From the base there are fibers called as. So basilar membrane, hair cells, and the tectorial membrane together is a part of dash. Organ of. Barabar? The afferent fibers are a part of which division? Auditory division. Cochlear division of the auditory. Clear? पक्का? Ear के कितने divisions? 3. कौन से? External ear ends at which part? Oval window, round window are a part of middle ear. The incus, external middle or inner bone? Middle. Connected to malleus and stapes. But a malleus connected to the and stapes is connected to the incus and the oval window. Correct, everybody? Who connects the tympanic cavity with the nasopharynx? Eustachian. Okay. The cochlea is a fluid-filled dash labyrinth, which is highly like a snail's shell or like a jalebi. Any questions? ये सब किसके बारे में बात किया मैंने? सिर्फ और सिर्फ anatomy of your eye, anatomy of your ears. Please try to nicely understand it first. Then I'll teach you mechanism of hearing. Copy down whatever you want, fast, within 5-10 minutes.